This is Shreya and welcome to Newsworld. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, श्रीमती देवाश्री चौधरी जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के इस संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम सब जानते हैं, डॉक्टर मीना रंजन सेन जब एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे, तब उनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया। डॉक्टर सेन ने अकाल और भूखमरी का दर्द बहुत करीब से महसूस किया। पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने जिस व्यापकता के साथ काम किया, वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है। वो जो बीज बोया गया था, आज उसकी यात्रा नोबेल प्राइज तक पहुंची है। साथियों, एफएओ ने बीते दशकों में
कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत नजदीक से देखा। देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं, छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, तो इन तथ्यों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहां पर अनेक नई योजनाओं पर काम शुरू किया था। आखिर दिक्कत कहां है? नतीजे क्यों नहीं मिल रहे और नतीजे कैसे मिलेंगे? इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया। इसमें भारत में ही तैयार रोटा वायरस, इस रोटा वायरस जैसे नए टीके भी जोड़े गए। गर्भावस्था और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए, उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। आज देश की गरीब बहनों बेटियों को 1 रुपये में सैनिटेशन पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से भी ज्यादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ
जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज, मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो बजट में होलिस्टिक वेलनेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना चाहता है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आए हैं। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है। साथियों, भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहां अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फसलों की सामान्य वैरायटी में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छी वैरायटी, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, इन कमियों को दूर कर देती है, अनाज की पौष्टिकता बढ़ाती है। बीते वर्षों में देश में ऐसी वैरायटी, ऐसे बीजों की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है, और मैं इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सभी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, उनको बहुत बधाई भी देता हूं। 2014 से पहले जहां इस प्रकार की सिर्फ एक वैरायटी किसानों तक पहुंची, वहीं आज अलग अलग फसलों की 70 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी किसानों को उपलब्ध है। मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ बायोफोर्टिफाइड वैरायटी स्थानीय और प्रारंभिक फसलों की मदद से विकसित की गई है। साथियों, बीते कुछ महीनों में पूरे विश्व में कोरोना संकट के दौरान भूखमरी,
कुपोषण को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स अपनी चिंताएं जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इन चिंताओं के बीच भारत पिछले 7-8 महीनों से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान भारत ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न गरीबों को मुफ्त बांटा है। और मुझे याद है कि जब ये अभियान शुरू किया जा रहा था तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि चावल या गेहूं के साथ साथ दाल भी मुफ्त मुहैया कराई जाए। गरीबों के प्रति, खाद्य सुरक्षा के प्रति ये आज के भारत का कमिटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन आज भारत अपने जितने नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न दे रहा है वे पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन कई बार हम रोजाना के जीवन में एक बड़ा ट्रेंड मिस कर देते हैं। फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत ने जो किया है उस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिससे जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें एहसास होगा कि भारत ने इस दिशा में क्या हासिल किया है। क्या आप ये जानते हैं कि साल 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू था और उसके बाद ही ये पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू हो पाया। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। क्या आपको पता है कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। साथियों, आज भारत में निरंतर ऐसे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के प्रति भारत के कमिटमेंट को दिखाते हैं। खेती और किसान को सशक्त करने से वहां से लेकर के भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक में एक के बाद एक सुधार किए जा रहे हैं। हाल में जो 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, हमारे यहाँ एपीएमसी की एक व्यवस्था सालों से चल रही है जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए
2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नए विकल्पों से ये जरूर होगा कि देश के जो छोटे किसान मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण पहले मजबूरी में बिचौलियों को अपनी उपज बेचने देते थे। अब बाजार स्वयं छोटे किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इससे किसान को ज्यादा दाम तो मिलेंगे ही, बिचौलियों के हटने से किसानों को भी राहत मिलेगी और आम खरीदारों को भी, सामान्य कंज्यूमर को भी लाभ होगा। यही नहीं, जो हमारे युवा हैं वो एग्रो स्टार्टअप्स के रूप में किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बनाएं, इसके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, छोटे किसानों को ताकत देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज का एक बड़ा नेटवर्क देश भर में तैयार किया जा रहा है। देश में 10,000 ऐसे कृषि उत्पादक संघ बनाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे किसानों की ओर से संगठन भी मार्केट के साथ मोल भाव कर सकेंगे। मैं एफपीओज छोटे किसानों का जीवन वैसे ही बदलने वाले हैं जैसे दूध या फिर चीनी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट से गांवों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प मूवमेंट से सार्थक बदलाव आए हैं। साथियों, भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही। अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां अवश्य बदलेगी। अब गांवों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ दूसरों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें भी हमारे एफपीओज की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार ने हाल में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इस फंड से एफपीओज भी गांवों में सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं। साथियों, जो तीसरा कानून बनाया गया है वो किसान को फसलों के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव से भी राहत देगा और खेती में नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत किसान को ज्यादा विकल्प देने के साथ ही उसे कानूनी रूप से संरक्षण देने का भी काम किया गया है। जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुआई से पहले ही
उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी, सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा। किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यानी किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इन सुधारों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। जब भारत का किसान सशक्त होगा, उसकी आय बढ़ेगी, तो कुपोषण के खिलाफ अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और एफएओ इसके बीच बढ़ता तालमेल इस अभियान को और गति देगा। मैं एक बार फिर आप सभी को, एफएओ को 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी भी प्रगति हो और विश्व का गरीब से गरीब देश, विश्व का गरीब से गरीब नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी की इन संकटों से मुक्ति प्राप्त करें। इसी कामना से पूरी शक्ति के साथ विश्व समुदाय के साथ काम करने के हमारे संकल्प को दोहराते हुए मैं फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर Namaskar. Friends, we are having today press conference on air quality in winter season, major environmental concerns in Delhi and NCR. Basically, it is a technical briefing to the media from Central Pollution Control Board. We have with us Chairman Shri Shiv Meena ji and Member Secretary Dr. Prashant Bhargava. This particular briefing will be live streamed on all the social media handles of PIB. I'll request the chairman first to give the opening remarks, then the member secretary will make a presentation. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा इस टेक्निकल प्रेस ब्रीफिंग में। हर साल विंटर सीजन में दिल्ली और एनसीआर जो पॉल्यूशन की समस्या है, ये बड़ी समस्या बनी हुई है, पर इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कुछ सालों में लगातार प्रदूषण में गिरावट देखी गई है। तो जो हमारे जो मेन बेसिकली दिल्ली में जो पॉल्यूशन दिल्ली और एनसीआर में है, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 3 फैक्टर्स हैं। तो इसको अगर ब्रॉडली हम देखेंगे, मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स, देन जैसे रीजनल फैक्टर्स है, जैसे स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स होते हैं, एंड लोकल फैक्टर्स। तो इन 3 फैक्टर्स के चलते हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं पॉलिसी लेवल पे, टेक्निकल एफर्ट्स में, वो सब चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में AQI लॉन्च की गई, फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2017 में लाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, वो सब हम इस टेक्निकल ब्रीफिंग में आपके सामने रखेंगे। और आज हम ये नहीं है कि विंटर सीजन में ही एक्शन लेते हैं, कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर हम लोग इस पर काम करते हैं। और एज ए रेगुलेटर, एज ए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वी कंटिन्यूसली कीप वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली एंड NCR, and we bring it to the notice of the respective agencies then and there, and we also monitor, and wherever
the situation warrants, we also take action against the agencies as well as the individual industries to control pollution in Delhi. With this, I would, and very recently, you are also aware that we have also, last 3 years, we are doing this exercise, that we depute special teams from the Central Pollution Control Board to visit the field. Last year also we did it. This year we commenced this exercise. कल 50 टीमें जैसे माननीय मंत्री जी ने लॉन्च की थी, शुरुआत की थी, और इस साल हमने इन टीम्स को 28 फरवरी तक का समय दिया है. तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगभग 5 महीने तक पूरा जाएंगे, हॉटस्पॉट्स को कवर करेंगे और देन एंड देयर समीर ऐप पे अपनी कंप्लेंट्स अपडेट करेंगे एंड एजेंसी के साथ में हम लगातार उसको कोऑर्डिनेट करेंगे. इस साल हमने और एक चीज़ की है कि जैसे पहले कंप्लेंट्स वगैरह पहले आती थी हमारी, तो वो कंप्लेंट्स पहले समीर ऐप पे डाल दी, लेकिन एजेंसी अटेंड कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए अब हमने इस बार हम उसमें जो है एक एस्केलेशन प्रोविज़न लाने वाले हैं कि अगर जैसे एक गिवन टाइम में कोई कंप्लेंट रिड्रेस नहीं होती तो वो हायर अप को एस्केलेट की जाए. तो ये सारे मैसेज दिए गए. मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी श्रीकांत गार्ग और डॉक्टर श्रीकांत गार्ग, तो वो ये प्रेजेंटेशन करेंगे. थैंक यू सर. नमस्कार. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. प्रदूषण के खिलाफ जो प्रयास हम करते हैं उसमें आप लोगों की लगातार मदद हमको मिलती रही. So please allow me to begin my presentation with thanking all of you, not only being part of our efforts to deal with air pollution, but also providing information, facts, right analysis to the public. So that's extremely important so that we clearly understand as to what are the sources, what is contributing what actions have resulted in improvement, what more needs to be done. So all the information that we put in the public domain, you have been helping us out in creating that awareness and also putting the right information to the public. So with that, I'll begin today's presentation. As you know that we have been continuously working, not only in terms of analyzing the information, also trying to use the information to guide our actions. हमारी सारी जो अप्रोच है साइंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, टू एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग. हमारी समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मोर साइंटिफिक इनपुट्स हैं, वी आर ऑलवेज ओपन टू रिसीविंग मोर साइंटिफिक इनपुट्स, ताकि हमारे एक्शंस को हम और रिफाइन कर सकें. So this presentation, the first component will be, I'll present some of the analysis that we did, and the key intervention that we have taken in the last 3 or 4 years. And then based on this understanding, based on the result that we got because of certain actions, how do we plan to move ahead, not only for this winter, but also in the subsequent years. This is not a problem that can be solved overnight. So we will have to plan for today and also for the coming years. This is just to show you how did we progress. The slide presents air quality index category number of days. The green one is good, satisfactory and moderate categories put together. And then red one, poor, very poor and severe categories put together. आप देखेंगे 2016 से लगातार जो अच्छे दिनों की संख्या है AQI के, उनमें बढ़ोतरी हुई है और उसी अनुपात में जो पुअर, वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरीज के दिन हैं वो कम हुए हैं. एंड दिस हैज बीन कंसिस्टेंट. Meteorology plays extremely important role, but then only because of meteorology, one can't expect such kind of scenario. Next one.
Similar thing in terms of concentration, PM10, PM2.5, which have been the major cause of concern. If you look at 16 and 19 data, there has been about 20% reduction in annual PM2.5 levels और PM10 में करीब 25% की कमी हुई है। और ये हमारे 2019 तक का डेटा है। 2020 में अभी लॉकडाउन की वजह से इम्प्रूवमेंट अलग हुआ है। Therefore, I'm only focusing on 16 to 19 time period. Next one. Looking at other NCR towns, दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी जो आसपास के हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, इनमें भी अमूमन स्थिति वही रही है। There has been improvement in number of good to moderate days, and then accordingly reduction in number of poor and severe air quality index days. As Chairman mentioned that there are multiple factors which influence air quality. Sources, जो emissions हैं, local sources will continue. There could be regional transport also depending on again meteorology. And the third factor itself is also the meteorology. Ability of the atmosphere to disperse the pollutants. एक छोटी सी एनालिसिस यहाँ पे है, 2 सितंबर अक्टूबर के। As I said, we continue to look at the data to guide our actions. 2019 और 2020 में हमने सितंबर और अक्टूबर में देखा कि नंबर ऑफ, आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है 2020 के सितंबर अक्टूबर में PM10 PM2.5 के कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा थे बजाय 2019 की। जब इसकी एनालिसिस की तो ये देखा कि 2019 में नंबर ऑफ रेनी डेज वेर मोर। एक बार जब बारिश होती है और जब वाइड स्प्रेड बारिश होती है तो डस्ट सेटल होती है, रीजनल बैकग्राउंड लेवल्स कम हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। तो नंबर ऑफ डेज हमारे 2019 में कहीं ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू 2020 सितंबर अक्टूबर में। आप देखेंगे 7 दिन थे 19 में और मात्र 3 दिन थे इस सितंबर अक्टूबर के दौरान। दूसरा जो पोल्यूशन का जो डिस्पर्शन में मदद होती है, विंड से होती है और हवा चलती है। तो जब भी हम देखते हैं कि जैसे उसी तरह की एक्टिविटी के साथ में हमें मार्च में, अप्रैल में बेहतर एयर क्वालिटी मिलती है। तो हवा एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से डिस्पर्शन होता है। उसके साथ ही मिक्सिंग डेप्थ होती है। जब पोल्यूशन हमारा जब होता है तो हवा के साथ वो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन होता है एंड इट ऑल्सो गोज अप डिपेंडिंग ऑन, वो थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्निकल है कि हमारा जो टेम्परेचर इस तरह से एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ साथ घटता है, उसमें कुछ बदलाव होता है। तो उसकी वजह से पोल्यूशन का ऊपर जाना या नहीं जाना निर्भर करता है। तो वो मिक्सिंग डेप्थ यदि जितनी ज़्यादा होगी उतना वॉल्यूम उसको मिल जाता है पोल्यूशन को डिस्पर्स होने के, और उस वजह से कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो ग्राउंड पे है वो कम हो जाता है। तो दोनों फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, ज़्यादा मिक्सिंग हाइट और ज़्यादा हवा, ये दोनों हैं तो बहुत बेहतर है। एक भी इसमें से कम होता है तो थोड़ा फर्क होता है, और दोनों यदि कम हो जाते हैं जैसा कि विंटर में होता है दिल्ली लैंडलॉक्ड एरिया। इन विंटर यू हैव एब्सोल्युटली नो विंड्स, completely calm conditions, and then mixing depth also, which normally is much higher, 1000-2000 मीटर्स तक रहती है, 3000 मीटर्स तक रहती है, वो घट के केवल 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर हो जाती है। तो पूरा का पूरा सप्रेस हो जाता है हमारा जो वॉल्यूम है जहाँ पे डिस्पर्शन हो सकता है। तो विंटर में these two things have extremely adverse impact on all the emissions that we have. ये आप डेटा जी देखेंगे तो इन दोनों का जो जोड़, दोनों का गुणा जो होता है, that's what is ventilation index. तो ये एक हमारा पैमाना होता है जिससे हमको लगता है कि whether condition is favorable for dispersion or it is not. आप देखेंगे 19 और 20 के डेटा यहाँ पे हैं। जो एवरेज हमारा वेंटिलेशन इंडेक्स 2019 में था वो 1850 था और करीब 1300 के आसपास 2020। सिमिलरली आप यदि अक्टूबर में 14 अक्टूबर तक का जो डेटा है, if you look at 1626
and around 1400 in 2020. तो हमने देखा कि सितंबर 19 जो हम डेटा को हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग we're not trying to justify कि why it is so. We need to analyze the data, so as to plan our actions on ground. तो ये हम देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में इस साल meteorological conditions were extremely unfavorable in comparison to the similar period in the last year. तो ये हमने एनालिसिस की. Now coming to the contribution, local sources, meteorology and also regional contribution. स्टेबल का कंट्रीब्यूशन है, ये कलेक्टेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट. IMD provides us a modeled data giving contribution of stubble burning emissions to Delhi air quality. ये जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया कि इसमें पहली चीज़ तो इमिशन है, वहाँ पे कितनी बर्निंग हो रही है, दैट्स नंबर 1. कितने इमिशन वहाँ जनरेट हो रहे हैं, कितनी बर्निंग हो रही है. उसके बाद में विंड डायरेक्शन, इफ इट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, दैट मीन्स दिस इमिशन वुड ट्रैवल टुवर्ड्स दिल्ली. यदि बर्निंग है और विंड डायरेक्शन इधर नहीं है, अपोजिट है, तो इम्पैक्ट मे नॉट बी फेल्ट इन दिल्ली NCR. सिमिलरली जो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड भी हम देखते हैं, तो वी डोंट हैव टू लुक एट ओनली ग्राउंड लेवल विंड स्पीड. वो लोकल डिस्पर्शन के लिए. आप हाई एल्टीट्यूड पे जो है विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड अलग हो सकती है. तो वी लुक एट दैट विंड, वेदर इट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ब्रिंगिंग इन पोल्यूशन टू दिल्ली और NCR और नॉट. उसके बाद लोकल यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं डिस्पर्शन की. सो ऑल दीज फैक्टर्स वुड डिसाइड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स. तो स्टेबल कंट्रीब्यूशन जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये आज 15 तारीख को 6% तक पहुँच गया. लास्ट ईयर में आप देखेंगे अमूमन 35-40 दिन का कंट्रीब्यूशन इसका रहता है, और वो कंट्रीब्यूशन करीब 15 डेज हमारा जो है मोर देन 10%, रेस्ट ऑफ द टाइम जो है इट इज लेस देन 10%. तो डिपेंडिंग ऑन कि पराली कितना जला, कहाँ जला, विंड डायरेक्शन क्या थी, विंड स्पीड क्या थी, उसका कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. इस साल जो डेटा हमें मिले हैं स्टेट से, जो नॉन बासमती चावल की खेती होती है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ सभी का कंटेंट इसका यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए ये और दूसरी भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बर्निंग होती है, पराली जलती है. तो इस बार जो नॉन बासमती कल्टीवेशन जो हुआ है, जहाँ ये बुआई हुई थी, फसल हुई है, पंजाब में, हरियाणा में, इस बार कम एरिया में ये फसल हुई है. आप देखेंगे करीब 23 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर था पंजाब में, इस बार करीब 20.7 लाख हेक्टेयर है. इसी तरह से हरियाणा में भी 6.5 लाख से करीब 4,30,000 के आसपास इस बार एरिया में कमी आई है. दिल्ली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिल्ली में ऑफकोर्स केवल 700 हेक्टेयर में नॉन बासमती चावल लगाया जाता है. तो इस बार ऐसा लगता है कि जो प्रयास हुए हैं, एक तो एरिया कम है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो बाकी प्रयास जो सरकारें कर रही हैं, एजेंसीज कर रही हैं, दैट इज द सेकंड थिंग. और उसके साथ साथ इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जल्दी शुरू हो गया. तो वी आर एक्सपेक्टिंग, आई मीन गॉड विलिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस टाइम द पीक कंट्रीब्यूशन ऑफ stubble may not coincide with the peak adverse meteorology in Delhi. तो इस बार हो सकता है शायद जल्दी हो जाए तो कुछ हमें इसका कंट्रीब्यूशन कम देखने को मिले. बट ये सारे के सारे, जैसे मैंने कहा कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पे इफेक्ट करता के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस समय सिचुएशन कैसी मेट्रोलॉजी की रहती है और उसका इम्पैक्ट का कंट्रीब्यूशन कम या ज़्यादा हो सकता है. ये हम देखते हैं कि आई मीन यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, some of the journalists who discuss with me, I find them much more technically knowledgeable. They discuss too much technical, and I also wonder, I do not know that much, and these people have picked up from so many different sources and then are sort of almost become technical. तो ये जो देख रहे हैं हम, जो हमारा इंडो-गैंजेटिक प्लेन है या सदर्न जो एरिया है जहाँ पे मेट्रोलॉजी है, लूज सॉइल है, तो ये सारे फैक्टर्स, ड्राइनेस है, वो सारे फैक्टर्स की वजह से और विंटर में जो मॉइस्चर की वजह से
कैप्चर हो जाता है, सारी वजह से वो देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे देखेंगे तो सदर्न साइड में इवन टुडे, ये कल का पिक्चर है, आज भी आप देखेंगे तो अपर पार्ट जो है यू विल फाइंड हाईली पोल्यूटिंग, और लोअर पार्ट जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मोस्टली गुड, यू सी डार्क ग्रीन कलर, दैट मीन्स हम वी आर एबल टू मीट द स्टैंडर्ड्स इन दोज पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वन, now coming to, and then we'll continue to analyze the data the way I presented. We always look for more and more scientific inputs, more and more in-depth analysis coming from different researchers, doing our own analysis to guide our actions. ये कुछ की interventions मैंने list किए यहाँ पे. We have been closely monitoring throughout the year. It's not that it's only in the winter. हमने मार्च में भी, उसके बाद जून जुलाई में एजेंसी के साथ मीटिंग्स की, रिव्यू किया। फिर अगस्त सितंबर में भी वी वर इन टच विद द एजेंसीज, वी गो टू एजेंसीज टू प्रिपेयर विंटर एक्शन प्लान, टू बी रेडी विद द फील्ड डिप्लॉयमेंट प्लान्स, टू क्लीन अप, टू टेक ए स्पेशल ड्राइव टू क्लीन अप द वेस्ट. So we have been continuously engaged with all these agencies, and then as I said, during winter we have been sending our teams. These are our scientists who do the normal duties. In addition, they also go to the field. Idea is, winter being critical, everyone has to be alert, everyone has to contribute in whatever the way one can. So therefore we try and provide direct feedback from the ground through these teams to the agencies. Monitoring capacity हमारी बढ़ रही है लगातार. Now we have total 142 monitoring stations. पिछले साल के मुकाबले में 29 ज़्यादा हैं. Many industries move towards natural gas. करीब 2600 industries are now on natural gas, जिसमें 230 के आसपास की इंडस्ट्री जो है लास्ट 1 ईयर में शिफ्ट हुई है. One of the important factor also is ऑर्गेनिक एरोसोल्स. अब हम लोग जैसे जैसे एनालिसिस होती है, डेटा मिलता है, CPCB डायरेक्टेड पेट्रोल पंप्स टू इंस्टॉल वेपर रिकवरी सिस्टम. और पिछले दिनों में दिल्ली NCR में 3600 पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे उन्होंने वेपर रिकवरी सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं. सो दैट ऑल्सो हैज़ ब्रॉट इन द पोल्यूशन लेवल्स. कमिंग टू थर्मल पावर प्लांट्स, 6 यूनिट्स और 2 पावर प्लांट्स. एक तो बदरपुर आप जानते हैं पहले बंद हो चुका था, पानीपत की एक यूनिट बंद हो चुकी है. उसके अलावा 6 यूनिट्स जिसकी कैपेसिटी मोर देन 2000 मेगावाट, दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एबीडी सिस्टम्स. नेक्स्ट वन. These are some of the earlier actions taken which have substantially helped us. Introduction of BS6, not only in Delhi NCR but the entire country. Why I am emphasizing on entire country? Because when you have BS6 compliant fuel all across, when starting April 1st, you have BS6 compliant vehicles all across. That means overall reduction at the national level in the years to come will also happen, and this essentially will bring in the background levels also in the entire country, also affecting Delhi NCR region. Express peripheral ways, around 60,000 vehicles which are not destined to Delhi. Now because of their diversion, things have improved. Anti-smoke guns, the technical committee suggested that certain measures, technological measures, which also included deploying anti-smoke guns in larger construction projects, and the information from states confirmed that so far more than 120 such projects have already installed the anti-smoke guns. CPCB, looking at the data, जो हमारा मॉनिटरिंग नेटवर्क का जो डेटा है, we are able to pinpoint, we are able to identify that there are certain areas, and you are also familiar with that, Anand Vihar, DDU. So these are the areas where you find pollution levels higher than the average or higher than the other parts of Delhi NCR. So we identify certain hotspots, wrote to concerned states,
that these are the hot spots, and please make hot spot specific plans. While all the actions at the city level would continue, should continue, इन हॉट स्पॉट्स में फोकस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, माइक्रो लेवल प्लान बनाने की ज़रूरत है कि ये प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ नेक्स्ट मंथ. एंड हियर दिस इज सम एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द हॉट स्पॉट्स. द अपर पोर्शन ऑफ द स्लाइड कंपेयर्स PM 2.5 and PM 10. In the January, I have picked up one winter month. In the January 29 and January 2020. And you would observe that there was substantial improvement in these hot spots in reduction of PM 2.5 and also in PM 10. In February, the situation was different. Except for 1 or 2 or 3, rest of the places, similar reduction was not observed. Now, as there are multiple factors, one of the reasons could be that during winter, of course, there were more focused actions, and probably as one moves towards comes out of the winter situation, हमारी टीम भी लास्ट ईयर 15 तक थी, तो जो ग्राउंड फीडबैक था वो शायद कम हुआ, एक्शंस में कमी हुई, तो फरवरी में आपको कम मिलता है. Therefore, this year we decided, looking at this kind of plot, that we must continue with our efforts from CPCB till February end. We also directed all the states to deploy similar teams much earlier. We said everyone will have to be on ground because this winter, long-term measures takes time, long-term measures are underway. But dealing with the winter essentially means that there has to be enforcement. We will have to curtail emissions then and there itself as quickly as we can. और उसके लिए सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है, हर एजेंसी को काम करने की ज़रूरत है. I also request through media, the people have been providing information through our Sameer app about the polluting activities. So would through media also appeal to the people not only to give us feedback, to give the agencies feedback about polluting activities, but also try and minimize emissions at their level. जहाँ पे ज़रूरत ना हो व्हीकल यूज़ करने की ना करें. During lockdown, most of us have started working from home. So wherever it is possible, the CPCB task force also, as you are aware, last 2-3 years has been providing vital inputs, advices for actions to deal with critical situation in winter. So this year also task force will continue to do that. Last year we made an appeal to the people to minimize their commute and then try and work more and more from home. तो इस बार भी यदि हम, क्योंकि लॉकडाउन में तो हमने देख भी लिया है, कई जगह तैयारी भी हो चुकी कैसे घर से काम करना है, तो यदि लोग भी इसमें और सहयोग करें पोल्यूशन कम करने में, एक्टिविटी को रिपोर्ट करने में, और घर से जहाँ तक संभव हो काम कर सकें, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू एवरी वन ऑफ अस. Now coming to what we intend to do, while we'll continue some of the tasks that we had been doing earlier, at the same time, what new probably we can contribute or we can do that. As I said, field inspections will continue, and this year we have, in fact today, around 25 teams have been deputed specifically to hotspot areas. तो वो हमारे hotspot भी inspections हैं. This year, last year also we had covered some part of NCR, but as you are aware, it was reported earlier. This year, in addition to Delhi, UP, Haryana, Rajasthan के भी जो hotspot areas हैं, districts हैं, वहाँ भी teams आएंगी. Another important, action or a step that we have taken, we have asked all the states, state boards particularly, to get undertaking affidavit from industries and construction agencies, large construction agencies. We also have given a defined format to the state pollution control boards as to what would be this undertaking. Essentially, asking industries to take the responsibility to run and operate their pollution control systems adequately, meet environmental norms all the time, meet consented
conditions. Do not use any unauthorized fuel. So this is all similar for construction activities. Take all pollution prevention measures, water sprinkling, anti-smog guns, covering the material. तो उस तरह का अंडरटेकिंग देने से what it does is A, it creates awareness among them, and B, having given an affidavit, also put some sort of pressure on them to comply with the regulatory norms. तो ये हमने एक सजेशन किया है. दूसरा, हमने स्टेट बोर्ड्स को और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनको हॉट स्पॉट मैनेजमेंट के लिए स्पेशल ड्राइव के लिए कहा था. ये सब मैं आपको बताया जैसे दिस ऑल वी हैड डन अर्लियर, और देन विल कंटिन्यू टू engage with them and then try and persuade them to do this effectively. Next one. CPCB has a mobile monitoring unit, and we also will be deploying this mobile unit. This was built last year. We renewed it last year. So we also will deploy this mobile monitoring unit to different hotspots to try and capture some of the data from there, not only to get the data but also to analyze as to where actions have been taken on those hotspots that gets reflected to this data. So that's what we do. Last year we shared with you about this cluster approach, wherein we look at PM 2.5 PM 10 ratios, essentially to identify कि ये सोर्स कहाँ से है. जो फाइनल फ्रैक्शंस हैं PM 2.5 का, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये कंबशन सोर्सेज से आता है, व्हीकल से आता है, बर्निंग से आता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, ओपन बर्निंग हो, बायोमास बर्निंग हो. और जो कोर्सर फ्रैक्शन होता है PM 2.5 से PM 10 के बीच का, तो उसमें डस्ट जनरेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हो, रोड डस्ट हो, वो उस तरह की जाती है. तो हम ये डेटा को एनालाइज करते हैं, और जहाँ लगता है कि ये PM 2.5, maybe you can just click on that. इस तरह से हमने बनाया हुआ है. ये 4 क्वाड्रेंट हैं. ना 4 क्वाड्रेंट में आपको जो ऊपर ग्रीन वाला जो क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसमें PM 10 के लेवल्स भी कम है, और PM 2.5 और PM 10 का अनुपात भी कम है. That means this is relatively cleaner. I'm not saying that this is perfect or within the norms. Relatively cleaner area, and the problem is more of dust. नीचे येलो वाले में आप आएंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगेन लेवल्स आर लो. जैसे इस प्लॉट में दिखाया 250 माइक्रोग्राम से कम के लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर PM 2.5 जो ज़्यादा है, मतलब इस एरिया में हमें काम करना है. तो इस एरिया में हमारा फोकस बर्निंग, व्हीकल कंजक्शन, उस तरह के सोर्सेज पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है. तो वो एजेंसी जो है अकॉर्डिंगली दे कैन डिसाइड कि मुझे किस एजेंसी के अंतर्गत कौन सा सोर्स आता है, उसको कहाँ काम करने की ज़रूरत है. एंड सिमिलरली राइट साइड द लेवल्स आर हाई. अपर पोर्शन में जहाँ पे PM 2.5 डस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जो क्रिटिकल क्वाड्रेंट लास्ट वाला है, अभी चूँकि अक्टूबर का डेटा अभी तक हम CS प्रेडिक्शन में पहुँचे नहीं है, सीरियल नहीं है, तो वहाँ पे भी फिलहाल एक भी एरिया नहीं है. बट देन when the meteorology gets adverse, you might have certain areas where the levels could be critical, और उसमें PM 2.5 का चूँकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी हमें वहाँ पे बर्निंग वाले सोर्सेज को डील करने की ज़रूरत है. Thank you. We did some inspection in September. Again, as I was saying, that we have been continuously working throughout the year. Even in September, we had we got engaged with them in June, July, issued directions, issued communications, and in September, we again deployed our team to find out what is happening on ground, so as to provide feedback to the agencies. So we got some information, and there were activities reported which were transferred to concerned agencies for action. So that also sort of sensitized the others concerned. Continuous meetings, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग करते हैं. स्टेट्स को IEC एक्टिविटीज़ जो है, the larger participation of people is extremely important in our fight against pollution. So that we need to do. We also have drawn a calendar of activities. इसमें हम लोग जो है लगातार एजेंसीज के साथ संपर्क में रहेंगे. We'll organize review meetings. Can you just go back? We'll organize review meetings. No, sector specific, theme specific, agency specific focus discussion.
जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, जो समीर ऐप या सोशल मीडिया पे जो कंप्लेंट्स हैं उसके रिड्रेसल के बारे में है। ये हम कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन एजेंसीज को प्रोवाइड करते हैं कि समीर में या सोशल मीडिया में इतनी कंप्लेंट्स आई हैं एंड सो मेनी आर पेंडिंग विथ यू। और जैसा सर ने बताया, दिस ईयर वी ऑल्सो इंटेंड टू अपग्रेड द सिस्टम, एंड इफ द कंप्लेंट डजंट गेट रिजॉल्व इन द गिवन टाइम, वो ऑटोमेटिकली जो है हायर लेवल्स पे जाएगी, सो दैट हायर लेवल का जो मॉनिटरिंग है वो भी थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह की हम जो है अलग अलग एजेंसीज के साथ में ये हमने अपना कैलेंडर ड्रॉ किया हुआ है अक्टूबर से फरवरी का। सो विल बी कंटिन्यूसली एंगेज विद द एजेंसीज, रिव्यू द सिचुएशन, ट्राई एंड एडवाइज देम, try to get the feedback from them so that our winter actions are much more focused, guided based on the data, based on the scientific inputs. Now this is something that will happen in the years to come. Source apportionment, as you are aware, Delhi में पहले 3 स्टडीज हो चुकी हैं. We had some information which guided our actions. अभी हमने एक रियल टाइम पिछले साल से हमारा एक रिसर्च चल रहा है अलॉन्ग विद IIT कानपुर. इसमें मेजरमेंट इज कंटिन्यूस, मिनट टू मिनट कंटिन्यूस मेजरमेंट्स हैं 3 स्टेशंस पे, और बेस्ड ऑन केमिकल एनालिसिस ये मेजरमेंट जो है ये केमिकल स्पीशीज उसके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं आपके पार्टिकल्स के, चाहे वो कार्बन है, सिलिका है, डस्ट है, वो सारे जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी भी लगातार ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग को सोर्स कंट्रीब्यूशन कहाँ का कितना है वो मिल जाता है. तो दिस इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस. अभी रिसर्च चल रही है, और इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि विंटर सीजन में बायोमास का कंट्रीब्यूशन काफ़ी हो जाता है. और दूसरा जो है अगेन जो हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक एरोसोल्स आते हैं, कुछ होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन से बनते हैं, कुछ डायरेक्ट इमिशंस होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से बन रहे हैं, बने कहीं और ट्रैवल होकर यहाँ पे आते हैं. तो उस तरीके के रिसर्च जब ये कंप्लीट स्टडी हो जाएगी तो मुझे लगता है इससे भी हमें अपने एक्शंस को और रिफाइन करने में मदद मिलेगी. एक एयरशेड के भी हम लोग काम कर रहे हैं. ये भी अभी हमारा नेक्स्ट ईयर के पहले फाइनल स्टेज में है. वी आर ट्राइंग टू बी श्योर अबाउट दिस. इसमें ये होगा कि दिल्ली NCR में किस एरिया में किस सीज़न में इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किस एरियाज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ पे फोकस एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है. तो उस हिसाब से दिस एयरशेड बेस्ड अप्रोच होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर विल बी एबल टू टेक मोर फोकस्ड एक्शन बेस्ड ऑन दिस अप्रोच. ये कंट्रोल रिडक्शन मैकेनिज्म का जैसे सर ने बताया कि हम लोग इसको सिस्टम को रिवाइज इम्प्रूव कर रहे हैं. इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल टू डू दैट. तो उसमें ये होगा कि जैसे ही होगा अलग अलग लेवल पे मॉनिटरिंग होगी, सो दैट रिड्रेसल ऑल्सो विल सब्सटेंशियली इम्प्रूव, हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग डाउन द पोल्यूशन लेवल. सो ये एक छोटा सा हम टेक्निकल डिस्कशन चाहते थे कि आप लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों का हमको सहयोग मिलते रहे, फीडबैक मिलता रहे हमेशा. और एजेंसीज़ के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं सभी के साथ. तो हर एजेंसी जिसको कंट्रोल करना है, हमारे साथ स्टेट की एजेंसीज़ हैं, और साथ में पब्लिक का सहयोग और मीडिया to give us right feedback, and then also provide the information to the people to ensure their larger participation. हमारा जो मीडिया कॉर्नर है, उस मीडिया कॉर्नर में हम लोग लगातार इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे ताकि आप लोगों को करेक्ट पिक्चर मिलता रहे और वो आप लोगों तक पहुँचा सकें. So I think thank you very much. Thank you, Dr. Prashant. Thank you very much. It was really a very informative but very technical too, which we had initially announced that it will be technical briefing to the media. My colleague 5050. So this is Milan from India today. You've given a very lucid presentation on all the factors that contribute to pollution. Right now we're looking at a very poor AQI in Delhi itself. So could you please elaborate what is causing this pollution in Delhi right now? Is it internal sources? Because according to your own website at Suffer, it's saying that till now there's only 6% contribution of stubble burning to the pollution in Delhi. So what is contributing, internal sources or external? You might have seen that presentation yesterday.
6% contribution was from stubble burning. So that is the, and it varies. That information we get from the from IMD to that suffer portal. So right now, yesterday it was 6%, but it varies depending on the meteorology and other things. Plus depending on the number of active fire agents. 34. रिकॉर्ड सर, मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल ये है कि स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, खासतौर पर स्टेबल को खरीदने और उसको इस्तेमाल करने की भी बात की गई थी सरकार के द्वारा। इस बार क्या लग रहा है, और पिछले सालों के मुकाबले 2 साल पहले हम भी वहाँ पे फील्ड पे गए थे, वहाँ पे हमने काफ़ी कवरेज किया था, तो इस बार कितना आपको कम लग रहा है कि कितना कम होगा, क्या कम होगा या नहीं होगा? और दूसरा ये कि जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं अपने खेत को काटने के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, नहीं कराई जा रही हैं, और दिल्ली में कितना फ़र्क आएगा इस बार देखने? देखिए, आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा, मैं ज़्यादा तो किसानों को मशीनें वगैरह तो आपको पता है कि पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में, चाहे किसान हो चाहे जो CHCs हैं, कस्टमाइज्ड सेंटर्स, तो उन सब में प्रोवाइड की गई है। और जहाँ तक इंसिडेंसेस ऑफ स्टेबल बर्निंग का सवाल है, अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है नॉन बासमती राइस की, तो नॉन बासमती राइस का अगर एरिया देखेंगे कि स्लाइटली लेस देन लास्ट ईयर। जैसे पंजाब में पिछली बार लगभग 22.9 लाख हेक्टेयर्स था, उससे घट के ये लगभग 20 लाख 20 लाख के करीब है, और इसी तरह से हरियाणा में भी थोड़ा कम हुआ है। तो उससे हमें उम्मीद है कि इस बार जो ओवरऑल इंसिडेंसेस कम होने की उम्मीद है, ये हम उम्मीद रखते हैं। रही बात करस्पॉन्डिंग पीरियड की, अगर डे टू डे कंपेयर करें लास्ट ईयर को, इस साल में लास्ट ईयर को और इस साल को, तो राइट नाउ वी हैव मोर नंबर ऑफ एक्टिव फायर इवेंट्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एट द सेम टाइम। उसका रीज़न ये है कि इस बार हार्वेस्ट थोड़ी पहले शुरू हुई है, तो ओवरऑल पर में देखेंगे तो शायद इस साल पिछले साल की अपेक्षा कम है। इसमें मैं एक बात बताना भी चाहूँगा। कल मेरी एडिशन चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हरियाणा से बात हो रही थी, तो उनसे जब मैं आंखें मांग रहा था इसकी थी, तो वहाँ से मेरे एक है कि वहाँ आपने सुना होगा कि मेरा पानी मेरे विरासत एक स्कीम जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है कि अगर पेडी से नॉन पेडी क्रॉप में स्विच ओवर करते हैं तो पर एकड़ वो 7,000 रुपये अनुदान देते हैं। तो इस स्कीम के चलते वहाँ लगभग 1 लाख एकड़ स्विच ओवर हुआ है। तो इसी तरह से सभी जगह जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर इस पर काम कर रही है। उम्मीद है इस साल पिछले साल की अपेक्षा तो कम रहने की उम्मीद है। आने वाले भविष्य में और भी, जैसे बायो डिकम्पोजिशन आपने सुना होगा, उसका भी पूसा के थ्रू एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उस पर इस बार एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इन सिटू उसको वहीं उसका फर्टिलाइजर बनाया जाए, तो और कम से कम समय में, क्योंकि फार्मर्स के लिए जल्दी थोड़ा समय टाइम भी एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़। तो उन सब पे काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जैसे बायो CNG पे काम कर रही है। बहुत सारे काम चल रहे हैं आने वाले समय में। 60. गौरव शुक्ला फ्रॉम NDTV। जैसे कि आपने बताया कि कल से 50 टीमें फील्ड इंस्पेक्शन पर हैं और 28 फरवरी तक रहेंगी। पिछले साल भी ये टीम्स थी सर, तो आपके पास कोई डेटा है कि पिछले साल कितने कन्विक्शंस हुए, कितने लोगों पर फाइन लगाए गए, या फिर क्या एक्शंस हुए हैं उन लोगों पर? और दूसरा सवाल सर ये है कि जो दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन ने, उन्होंने लेटर लिखा था पावर मिनिस्ट्री को कि जो 13 थर्मल प्लांट्स हैं उनको ये बंद किया जाए। क्या उस पर CPCB बोल रहा है पावर मिनिस्ट्री को बंद करने के लिए? सर ये 2 सवाल हैं। रही बात टीम्स का, हमारी जो टीम्स है तो इंस्टेंटली, जैसे आज जो टीम्स गई है वो स्पॉट्स हैं, दे टेक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द सफर पोर्टल। अगर आप चाहें तो सफर पोर्टल की डिटेल्स हम आपको बता सकते हैं। रही बात थर्मल पावर प्लांट्स की, तो NCR में अभी टोटल 15 यूनिट्स एक्टिव थी, उनमें से 1 यूनिट तो ऑलरेडी बंद कर दी गई है। पहले आपको पता होगा 2018 में ऑलरेडी बदरपुर हो चुका है बंद, और पानीपत की 1 यूनिट अभी हाल ही में बंद कर दी, बल्कि 14 यूनिट। तो हमने उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप FGD उसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की फैसिलिटी लगानी है। तो बची हुई 14 यूनिट में 6 यूनिट में ऑलरेडी
ऑलरेडी FGD इंस्टॉल हो चुका है और उनकी मेगावाट के हिसाब से अगर कैपेसिटी देखें तो इन 14 यूनिट्स की टोटल कैपेसिटी है 5350 मेगावाट और 5350 मेगावाट में से इन 6 यूनिट की जो महात्मा गांधी PCS में NTPC का हरियाणा का और दूसरा NTPC का जो दादरी में है, इनमें 6 यूनिट में 2160 मेगावाट उनकी टोटल कैपेसिटी है। लगभग दैट इज अराउंड 45% में ऑलरेडी FGD लग चुका है और 5 यूनिट में NTPC की दादरी में 2 यूनिट और NTPC की जज्जर में जो अरावली PCB है जज्जर में उसमें 3 यूनिट, इन 5 यूनिट पे काम चल रहा है और उनकी कैपेसिटी है लगभग 2480 मेगावाट यानी कि 46.5%। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 40-41% में तो FGD लग चुका, 46-47% पर FGD पे काम चल रहा है। तो बचे सिर्फ 13% ऐसे हैं NCR में 3 यूनिट पानीपत इसमें पानीपत DPS हरियाणा की जिन पर अभी काम होना बाकी है, तो इसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इनको डायरेक्शन दे चुके हैं। 252 दूसरा जो टीम्स का जो डेटा है ना, वी हैव दैट डेटा, वी एनालाइज व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग, कितनी एक्शंस CNT बेस की हैं, कितनी बर्निंग के इंसिडेंसेस हैं, एंड देन स्टेट्स हैव डन लॉट ऑफ एक्शंस ऑन ग्राउंड इंक्लूडिंग लीविंग फाइन्स एटसेट्रा। सर मैं शिवम हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। भार्गव से आपने बताया कि जो पीक कंट्रीब्यूशन होगा स्टेबल बर्निंग का, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट माइट नॉट कोइंसाइड विद एडवर्स विंटर कंडीशंस। कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? एंड अनदर क्वेश्चन, आप हम लोग पोल्यूशन का बात करते हैं तो PM 2.5 PM10 ज़्यादा फोकस में रहता है, बट सेवरल स्टडीज़ मोस्ट रिसेंटली IIT दिल्ली का एक स्टडी हुआ है जिसने बताया कि PM 2.5 के जो लोअर पार्टिकल्स होते हैं PM1 एंड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और उनका कुछ मेजरमेंट का वी डोंट हैव एनी मेथड और स्टैंडर्ड। बार जो जैसे हार्वेस्ट सीजन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में बर्निंग पहले स्टार्ट हो गई, अभी बर्निंग ज़्यादा है। उसकी हमारी जो क्रिटिकल सिचुएशन आती है जो नवंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक के आसपास, उस समय में क्या होता है कि लोकल सोर्सेज मेट्रोलॉजी भी और एडवांस होती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा। तो हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाए, अगर इसके पहले वो एक साथ कोइंसाइड करता था। तो वो उसी उम्मीद से हम कह रहे हैं कि शायद इसका 2 वजह से कम हो जाए, बट देन डिपेंड्स ऑन मेट्रोलॉजी और उस समय क्या सिचुएशन रहती है। और दूसरा जहाँ तक सवाल है कि स्टैंडर्ड्स हमारे PM 2.5 PM10 के हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, WHO ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट कि जो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लोकल कंडीशन जो हैं नेशंस अपने हिसाब से अपने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल के हिसाब से यूज करते हैं। सबके अपने अपने इम्यून सिस्टम डिफरेंट होते हैं, रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं। तो अभी PM 2.5 PM10 के स्टैंडर्ड्स हैं, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस की जरूरत नहीं कि जितना फाइन पार्टिकल्स होगा। PM1 देयर इज ऑल्सो डिस्कशन कि इट इज़ नॉट जस्ट द मास, इट इज पार्टिकल नंबर्स। यदि जी मान लीजिए 2 ग्राम भी है, 2 ग्राम में 10 पार्टिकल हैं और 2 ग्राम में जी 10,000 पार्टिकल है, तो 10,000 पार्टिकल भी 1 ग्राम में 10,000 पार्टिकल है, दैट इज मोर हार्मफुल। एंड देन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये सब इस तरह के एविडेंसेस हैं, एंड देन दीज आर ऑल वर्क फॉर द फ्यूचर। अभी तो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज द करंट प्रॉब्लम। 178 Hi sir, I am Agraj Pratap from UNI. My question was regarding the hotspots that you've identified across the national capital. ये जो hotspots हैं, इन सब में कौन सा ऐसा कॉमन रीज़न है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए? दूसरा सर, क्या आने वाले टाइम में आप सिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक जोन्स भी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हीकल्स का ही आना जाना अलाउड होगा, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? और पिछले कुछ सालों में ऐसे कौन से प्रमुख रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली में
इस सीज़न में बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो कि ये सांस लेना है, क्योंकि काफ़ी साल पहले भी स्टबल बर्निंग और ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन तब ये लोगों को महसूस नहीं होता था। अब ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो हॉटस्पॉट्स के जो कॉमन सोर्सेज जो है मोस्टली ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। एक तो प्रॉब्लम वहाँ पे रोड डस्ट की है, अनपेव्ड रोड डस्ट, और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम देखा गया है हॉटस्पॉट्स में वो देखा गया है वेस्ट डंपिंग एंड बर्निंग। तो वेस्ट डंपिंग, बर्निंग, रोड डस्ट, एंड देन मे बी डिपेंडिंग ऑन इफ इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया देयर कुड बी सम इंडस्ट्री समटाइम्स। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स देखी गई है। दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं zoning in the city to deal with vehicle pollution or limiting vehicular movement, इसमें दो इनपुट ये हैं कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए उसमें वो काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम देख रहे हैं कि स्टबल का कंट्रीब्यूशन यहाँ तक आता है तो किसी 2 किलोमीटर 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब व्हीकल कम कर देंगे या लिमिट कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लोकलाइज कुछ कम हो सकता है, लेकिन पूरे शहर में कम हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं। बाकी शहरों में जो बाकी जगह में जब व्हीकल्स रहेंगे तो कंट्रीब्यूशन हर जगह हो जाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो फोकस्ड एक्शन ट्रैफिक हॉट स्पॉट पे जो लेने की ज़रूरत है, ईज आउट कंजेशन, वो मेरे ख्याल ज़्यादा कारगर होना चाहिए। Our focus when we interact with the transport and traffic agencies, our focus is on management of the traffic rather than stagnation at one place. Should keep on moving. So because वो stationary होता है तो then lot of emission and other things. So the focus is on free flow of the traffic and उसके लिए जो भी measures उनको लेने हैं that 262 सर मैं संजय मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो पराली का जो धुआं होता है उसी के साथ साथ दिवाली का जो समय होता है उसी के आसपास ही होता है। तो फायर क्रैकर पे बैन करने का पिछले साल भी आप लोगों ने प्रयास किया था और उससे पहले भी किया था, लेकिन वो बैन उस तरीके से लग नहीं पाया था। जब वो पटाखे जब बजने शुरू हुए पूरी जो हवा है वो दिल्ली की पूरी एकदम खराब हो गई। तो इस बार क्या हम पहले से कोई इस तरीके का कोई प्रयास करेंगे कि जो पिछले साल हुआ था वो इस बार? ये जो है मैटर जैसे आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में मैटर है, वहाँ पे जो चल रहा है इसमें कमेंट करना। लेकिन पिछले साल जो नीवी ने ग्रीन क्रैकर जो लेके आए थे जो करीब 30% इमिशन करते हैं, तो वो ग्रीन क्रैकर की बात है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि मामला विचाराधीन है तो उसमें बैन करना, लेकिन पिछली बार चूँकि माननीय न्यायालय का आदेश था तो उस पर फिर सख्ती से स्टेट को कहा गया था कार्रवाई करने। 15 सर मैं अजीत हूँ यूनिवार्ता से। सर एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अलावा और किन किन शहरों पर इस बार फोकस है, कहाँ कहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है इस समय, और दूसरा ये कि जो आपने कहा कि 6% पराली का कर रहा था, तो क्या ये बता सकते हैं कि वेहिकुलर एमिशन कितना रहा था कल, रोड डस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा था, कंस्ट्रक्शन डस्ट का कितना रहा था? और एक सवाल और सर कि क्या दिस ब्रीफिंग इज ऑन दिल्ली एनसीआर। आप पहले दिल्ली एनसीआर से बाहर गए फिर जो है जस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी टू अदर्स प्लीज बी स्पेसिफिक फॉर द टुडेज ब्रीफिंग। सर दिल्ली एनसीआर का भी सवाल था, कल का जो डाटा है वो दिल्ली एनसीआर से ही रिलेटेड है, और क्या इस बार ऑड इवन की भी कुछ चांसेज हैं? सस्टेन्ड फोकस देंगे एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम जो चल रहा था उसको हमने मिशन मोड में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्लान बन चुके हैं, उस तरह से कार्रवाई हो रही है। सोर्स अपोर्टमेंट के बारे में ये जो सोर्स अपोर्टमेंट है, सोर्स अपोर्टमेंट जो स्टडीज हम करते हैं बेसिकली हमें एक्शंस के गाइडेंस भी होती है। जैसे मैंने बताया कि रियल टाइम मेजरमेंट का भी रिसर्च जो चल रहा है वो अभी दैट इज समथिंग विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस।
दूसरा क्या होता है कि ये जो एक्शंस हमारे ग्राउंड पे हैं वो डेली बेसिस पे जो कंट्रीब्यूशन है, आज जैसे मान लीजिए मुझे ये हो भी जाता है तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आज कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, बट दैट हैज हैपेंड नाउ, बट टुमारो इट माइट बी डिफरेंट। तो हमें ब्रॉडली जो है डिफरेंट सीजन्स में या मंथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होता है टू प्लान आवर एक्शंस। तो डे टू डे का ना तो अभी हमारे पास संभव है और उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशन हो पाएंगे और उसकी शायद ज़रूरत भी ना हो। Second last question, 61. दिल्ली सरकार का ये जो कदम है कि रेड लाइट पे सिग्नल पे गाड़ियां रुकेंगी और उससे प्रदूषण में कमी आएगी, तो क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से ऐसी कोई स्टडी की गई है या पहले कुछ आकलन या अनुमान लगाया गया है कि सिग्नल पर गाड़ी रोकने से क्या प्रदूषण पर काबू पाने में मदद मिलती है? देखिए, इसमें कोई डिटेल स्पेसिफिक स्टडी अभी मैं कोट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यदि हमें इंजन चालू रहता है, चलता नहीं है आइडलिंग कंडीशन में, तो इमिशन होते हैं। और जब इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो ब्लॉक्स लगी हुई थी, वो इसेंशली इसीलिए लगी हुई थी कि लोग इंजन बंद कर सकें। तो आइडलिंग इमिशन तो होते हैं, यदि बंद होगा इंजन तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन कम होगा। Last question, please, last question. ऑड इवन जो है, ऑड इवन के बारे में यदि आप ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में देखेंगे तो ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में ऑड इवन कम्स इन व्हेन वी रीच इनटू सीवियर प्लस सिचुएशन। जो सीवियर प्लस सिचुएशन में आती है तब वो ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के हिसाब से ऑड इवन इम्प्लीमेंट होता है। Hi sir, Shreya this side from Business Standard. I have two questions. One is regarding the vehicular emissions. Given that this year there would be no odd even scheme, do you think that vehicular emission will be a major cause of pollution this year along with stubble burning? Second, Supreme Court today has identified right to breath and also has set up one-man committee under advocates and has also asked for NCC cadets and Bharat Scouts etc. to be an on-ground people. How much help would that be, and would it work along with already the ground stuff that you're there? If you can elaborate on that. Regarding those second questions, I would like to comment because we don't have the details. And regarding the first one, vehicular emission from the 1st April 2020, BS6 vehicles have been introduced in Delhi, and gradually, year on year, the number of BS6 vehicles will go up, and we could see the studies shows that the using BS6 fuel, it results in something like 30% reduction in the emission. Whereas in case of BS6 vehicles, BS6 compliant vehicles, the reduction would be as far as high as 70%. So when the number of BS6 vehicles in the overall vehicle population it goes up, definitely we'll see good positive results. Thank you very much. Thank you, friends. Yeah, congratulations. Hello. Congratulations, man. You've been working towards this moment for a long time, and I know it's still probably setting in a little bit, but how are you feeling up there? You know, it was a long journey for me, but finally on the top. Amazing feeling, you know. There is no words how to describe this, you know, how I feel right now. My mind is in different place, you know, right now. Somewhere in the space, I don't know. As far as his performance tonight and what you saw on the other side, I mean, did he do anything that surprised you, or did everything play out the way you thought it would? I think that he gonna put more pressure on me, but I put pressure on him, and that was good idea. And I expect that way he was completed as what we expect, you know. And like I tell you before, we have a lot of good sparring partners in our gym, Southpaw Kickboxer guys, so I was ready for this time. You hurt him to the body pretty early, man. That nasty mark on his ribs. When you saw that, does that change your mindset? I mean, does that become like a target all of a sudden? Does that change your game plan a little bit? You know, my left leg is always really good and really hard, you know. This is something when I even don't want to kick, it's go, you know, automatically. So I don't, and when I kick first time or second time, I see that he's slowing down a little bit. So I knew that he feel it.
But in second round, when I see that I broke his nose, I knew that that the finish will be really soon. Yeah. And when you dropped him, it was kind of a stagger before he fell down. I mean, did you know right away, like, this is it, now it's going to be over? Yeah, when he was on the ground, I knew that a few more punches and it will be over. He will not get up anymore. Now, here's the interesting thing. I know you guys were sick of talking about John Jones, and the first thing you do is go talk about John Jones. So right now we can talk about him because I don't want to talk before fight, you know, because my opponent was Dominic. Now I don't have opponent, so John Jones, why not? But nobody knows what he's doing right now, I think so. So we will see. But yeah, why not? He promised me this fight after Albuquerque and after when I knocked out Corey Anderson. Last thing for me, if it's not John Jones, like you said, we don't know, maybe he goes to heavyweight. Do you see another name that makes the most sense for your first defense? Maybe Thiago Santos, when if he wins his fight against Teixeira, that would be really good. If for some reason that fight doesn't get rescheduled, would you take him right away? If they don't fight, because they've had to cancel it a couple times? Now I want to celebrate a little bit, rest. So first celebrating. You know, soon I'm gonna be a father, so I have to focus on that also. I want to focus on that, not only I have to. And after that, we can talk about next opponent and the next first belt defense. But now I'm just, want to celebrate. I have to come back to Poland, see my parents, hug my mom, drink beer with my father because I don't see them. I don't know how many times. I don't know how long I was in my hometown and don't see them. So I want to meet my family, and then we can talk about next fight. Jan, you are 67 right now, and 37, 37. Oh, whoa, thank you. But this is what I'm going to. So, and then next year after year, you are getting better. So, on what age your pinnacle of your career? I'm like wine, I'm 67. 67. Just that I just knew my body better. I knew myself better. I'm just smarter right now. I know how to train smarter. My experience is much better, and I just believe in myself. I back to roots to my old coach, and that's what works really good on me. And this is the best proof on that. It seemed like he was staying away from you because he respected your power, and then towards the end of the fight, he started feeling a bit more comfortable and moving around freely, and then he got hit. Did you feel that? Could you see him getting more comfortable? Yeah, I see that he tried to be more, flexible and stuff like this, but he started open himself. So I see, a couple of holes in his game, and I use it, But like you say, I think that he gonna be, like I said before, that he gonna put a little bit pressure on me, but he don't put, I put pressure on him, and that was really good idea. Did you guys exchange any words in the cage after the fight? I just say to him that he cannot give up and just rest and back to open. And and that's it. I wish him best in the future. And last thing for me, did you feel it when you broke his nose? I don't feel it. I see it. Yeah. I don't feel it, but when I see that his nose is here. Jan, congratulations on the victory. Since you lost to Thiago Santos, you've been on a 4-fight winning streak. What's changed? Thiago just makes me better fighter. He just showed me that I have to keep my hands higher, and that's it. And like I tell you, I'm always believing in myself. I just I find what goes wrong in this fight, and that's it. And you've trained, sparred with him. What confidence level do you have if he is your next opponent without giving away what happened inside the gym? Yeah, we train together after our fight, so if I'm gonna have first take the belt defense with him, so I'm gonna have a nice new plan for him. This time, if the fight will go on, so this time I'm gonna be the winner. Former champ Joanna Jędrzejczyk, I know she was on the Polish broadcast. What are they saying back in Poland right now about their champ? I don't know what they say because I don't have Wi-Fi here, so I can check it. But I think that whole Poland right now is celebrating. It's amazing. I think it's I hope so. People dance on the street right now. Congratulations. Thank you. Okay, you said that you want to rest right now, but when we should expect that you will come back and maybe you have
place where you would like to fight your first to have your first title defense? I don't know. Now I'm waiting for my son, and after that we can talk about my next fight. Now I have to relax, celebrate, be happy this moment. Hassan Abdurrahman from Arroya newspaper here in UAE. I just want to congratulate you and say congratulations. You made a very good success tonight. I just want to ask you about your stay in Abu Dhabi. How do you feel while you are here throughout the last period until today? No, it's my second time here in Abu Dhabi, and always it's great stay here. Okay. Hi, right here. Wait. No, it's my second time here in Abu Dhabi, and always when I'm here, it's great place, to visit. The atmosphere here is really good. People are really nice. Food is amazing. Right now it's pandemic situation, so we can stay in our hotel only and just go to the one beach here. So, but anyway, hotel was really nice. People who work over there, they are really nice. Food amazing. So acclimatization was really good. Everything was amazing. I will remember Abu Dhabi to the end of my life. What happened here. Amazing. Thank you, Abu Dhabi. Right back here. So you mentioned Thiago Santos. How do you see his match against Glover Teixeira? I think he's gonna knock him out. I believe he got knockout punch power, and I think that he can knock him out. But we will see. Teixeira, he also had a second life in his career. He also right now he's in really good shape. But I hope so. The fight will go on because they how many times they cancel it? Twice, yeah. So I hope so. Now they make it, and we will see. You mentioned that you would like to fight him if he wins against Glover, but if Glover wins, how do you see him as opponent? Also really great. Now in 205, it's really the division is amazing right now. A lot of really good fighters, young fighters. So it's a lot of opponents over there. We will see. I would like to fight, John Jones or Thiago. If not, we will see what the UFC gives me. Yeah. Back about Thiago, what would be different between your first fight and now if you guys fight again? I cannot tell you, but the score will be different, Yeah. What did you make of Israel Adesanya's performance in the co-main event, if you got to see it? I don't see it. I just see the finish. A lot of people were talking about him moving up to 205. Would that be a fight that would interest you down the road? Maybe. Why not? Yeah, he said that before something in the interviews. Yeah. So you see, we've got another one. So why not? We can try to do this. So I'm open, but give me 2 weeks break, okay? Congrats. Thank you. Yeah, thank you. Fight of the night was Kaikar France and Raval, and then the performance of the nights went to Blachowicz and Adesanya. Those guys all won $50,000, so congratulations to them. I was going to ask you about Adesanya. Clearly, a performance of the night, worthy man. What did you think about him in there tonight? Well, so much for fight of the year, but domination of the year. I mean, it was weird because. If you look at every other fight that Costa has had, he comes out and goes after people like they owe him money, and I think he landed one jab in this fight.
Didn't try to clinch in the fence, didn't try to put pressure, kept going back to the center of the octagon. It was very weird. Yeah, it wasn't weird. I mean, do you think he was in his head? I mean, was it just the antics that slowed everything down? What happened? You're gonna have to ask him that question. I have no idea. But you know, no matter what it was, Adesanya put on a clinic. I mean, the first 3 calf kicks busted up his leg. Then he hit him right on the side of the knee. Had a huge welt on the side of the knee. Then the shin to the eye, and just absolutely dismantled him and easily won the fight. He said he likes the idea of Jared Cannonier next if he wins. Does that sound like a good fight to you? Yeah, I mean, that's the fight if Cannonier wins. And I love that about Israel. You know, he's ready for who's next. Who else thinks they can beat me? It's just, the kid is an absolute stud. Tonight, congratulations to, you know, him and Costa. They broke a bunch of records tonight, man. It's unbelievable. Their stare down, when we went live, their stare down was the biggest stare down ever, most viewed ever in UFC history. It beat Khabib and Conor by 1.5 million when the show started. I don't know what it's at now. He was chatting you up afterwards. Was that really just about weight cutting the whole time? Was that? Yeah, you know, 2 of his guys, so yeah, he was all fired up about that. Listen, he's not wrong, you know, but that's not our place. That's the commission that handles that. But he's not wrong. Take 80 or 90% of anybody's money, they're going to show up. They're going to show up the right way. You got a new light heavyweight champion as well. What did you think about Jan Blachowicz' performance tonight? He looked awesome, man. He looked unbelievable. It's like he had a laser on that kick to the body, man. That thing kept landing right in the same place and was ripping Reyes apart. And I believe that was a huge factor in the fight. Question immediately, he calls out John Jones, basically. Can you tell us what is going on with John? I mean, would he come back down as heavyweight? What's up with him? Listen, you guys know as much as I know about John Jones. But yeah, I like that he wants to fight John. You know, he could have called out whoever the next contender is and whatever. The fact that, you know, these guys respect Jones enough and the fact that, you know, they want to be the guy who beats the guy, I love it. Got to ask you about Diego Sanchez. You know, he told us coming into this fight that he's got 4 fights left on his deal. He wants to fight out that contract. I know you got a ton of respect for Diego Sanchez and everything he's done. Are you comfortable with him fighting out 4 fights? I love Diego Sanchez. And I don't know. It's something I got to think about, and it's obviously something that I got to talk to the guys about back when we get home in the office and see what everybody thinks. I want to do what's, you know, I got these guys now. You got Diego Sanchez, who fights his heart out every time he fights. He was part of Tough One. Everybody knows how I feel about those guys. And he's just a great person. Then you got Cowboy, who you can say all the same things about. And, you know, as these guys start to get older and start racking up some losses, it's tough to, you know. But Diego's like, I want to say, I don't know for sure off the top of my head, but he's like 3 out of his last 5 or something like that. But, yeah, it's tough. It's the not fun part of this job. For sure. A couple quick ones outside tonight. Conor McGregor made waves over the last 24 hours or so, talking about this, well, first of all, sharing direct messages from you. Did that upset you that he kind of shared private conversations? Listen, I've had people blowing me up left and right. I mean, everybody here knows. I mean, even the ladies, this is some man code stuff, you know. It's just something you don't do. It's one of the dirtiest things you can do, which, by the way, you know, because we're just talking about Diego Sanchez, you know, and Diego Sanchez is in there in a private conversation that I was having with Conor. When you're the number 2 or 3 ranked guy in the world and you're telling me that you want to fight, but you want to fight unranked 39-year-old Diego Sanchez in a main event in Los Angeles, you know. Fair enough. How valid is this Pacquiao thing, though? Can you comment on that? I mean, is this a real thing that can happen? I have no idea. No idea? Listen, you guys have been asking me about Conor McGregor forever. Did you see Conor McGregor's tweet? Which one? I think the retirement tweet? Oh, yes, I'm retired. Birthday cake. I'm retired.
Fair enough. Last one for me. There was a report that came out tonight. Hamzat Chimaev, obviously everybody's excited about Hamzat. It said either Wonder Boy or Leon Edwards for December 19th. Can you give us any information on? Where'd that come from? Brazilian outlet, I believe. Yeah, they do that all the time. The Leon Edwards is not true, but we've offered it to Wonder Boy. Wonder Boy wants to fight Leon Edwards, so we'll see how this plays out. That's completely not true. Leon Edwards is not lined up to fight Hamzat. We were looking at Wonder Boy. Wonder Boy wants Leon, so we're nowhere on that thing. For anybody to report it, it's total fucking bullshit and typical MMA fucking silliness. Damn. When you see Paulo Costa in the first round taunting and doing all this goofy stuff, like that's all well and good to entertain people, but he's not winning the round. Do you sit there and get frustrated at a guy who's letting his opponent start to get a lead on him? Yeah, it doesn't frustrate me. It's just, I mean, you guys know enough about the sport that if he fought the way he fights, look at the way he went after Yoel Romero, one of the most dangerous guys ever. And then he stays away, he stays on the outside, taking damage to that front leg. Then he gets, when he does rush in and get him up against the cage, he backs out to the center of the cage again. Just never tried to get in the clinch. I think he only landed a jab. Didn't really throw any punches at all, only threw kicks. It was very weird. I just sat there going, holy shit. And then obviously, Adesanya just went to work, picked them apart, piece by piece. Made it look really easy. You mentioned the records this fight set in terms of numbers leading up to it. Obviously, the fight itself was super anticipated. You promoted it as one of the greatest fights of the year, potentially. But is this also Fight Island playing a part again? Is it just something about this brand of Fight Island that just builds people's excitement? Listen, the UFC is on fire right now. I mean, the records we broke tonight, we had like tons of records on social media. Social media records were off the charts, and all the numbers that are coming in are massive. And every time we're doing fights now, they're big. I mean, if you look at our social media in the last year, UFC social media has gained 8 million followers in the last year. 2.5 million since Florida. Mine has gained millions since Florida. The whole sport is, it's on fire right now. Our numbers keep going up, our ratings keep going up, and it's all good. Is part of that because it's not just like America that's had nothing to do for the past few months, it's the whole world's been shut down. So are you getting followers from all over the world, or is it just America it's building up in? Yeah, I think it's because, I didn't listen to any of the fucking bullshit from the media, and I went, and I think people liked it, and people that never watched the sport before got into it and started to watch, and the growth has been phenomenal. I think that's a big part of it. It's not a coincidence that all these numbers have gone up since Florida. How big do you anticipate Khabib Gaethje going to be then? How big does what? How big is Khabib Gaethje going to be? Yeah, so the question is now, does Khabib Gaethje break the records that we broke tonight? Last one from me. Earlier today, Nate Diaz put out a promotional video of himself with Masvidal, obviously saying round 4, wanting the rematch with Masvidal. Have you got any progress on that fight? No. Is it possible that you guys are looking at Masvidal versus Colby instead? Yeah. Is that because... It's very possible. Is that just because negotiations with Nate didn't go anywhere? No. I don't even know if we talked to Nate yet. But yeah, after the Colby fight, I mean, how do you not make that fight? That's a fight that makes sense. The Nate Diaz rematch is going to be there no matter what happens. And actually, just one more thing. Have you heard anywhere further with Nick Diaz? I told you guys this last time. Okay. I want to talk about Brandon Royval. This guy's had 2 UFC fights, and it looks like he's going to be fighting a top 5 opponent. Huge fast track, and maybe he's 1 fight away, 2 fights away from a title fight. Just thoughts on this guy? Yeah. Fight of the night winner. Awesome fight.
Awesome finish, and he's an exciting kid. Yeah, I love it. I want to talk about what's next for Jan Blachowicz. Is it for sure the winner of Thiago Santos and Glover Teixeira, if that fight is still going to happen, would get Jan Blachowicz, or if John Jones puts his name in the hat, would he get that opportunity over them? Yeah, those are the guys that are fighting for the next shot. But obviously, if John Jones wanted that fight, we wouldn't deny John Jones the opportunity. Habib was in attendance tonight. He was cornering his teammate. Was wondering what conversation, if any, you had with Habib. I didn't see him tonight. Yeah, I didn't see him. And lastly, I want to talk about Leon Edwards. We brought him up earlier. Do you think he's going to get booked for a fight in 2020? Is he turning down fights? What's his status? No, we're ready to book him. Yeah, hopefully he'll fight this year. Hopefully. If not, he'll fight the beginning of next year, very beginning of January or something. Any issues with visas coming to the United States, or would it be here in Fight Island? Yeah, it would be anybody who's coming from out of the country that isn't easy to get into the States would fight here. Thank you. Hi, Dana. Thank you. Right here. I know there was a lot of expectations for this fight, this match, Paulo Costa versus Adesanya. Are you a little disappointed? Are you disappointed for what you saw today? Listen, when you break down a fight and you think about how the fight's going to go, that shouldn't have been the fight that happened tonight. It should have been a much tougher fight. But you can't be disappointed when you have somebody that's as talented as Adesanya is, and he comes out and imposes his will and literally dismantles a guy as good and as tough as Costa. You know, you don't look at the fight and go, oh, I guess Costa wasn't this or that. No, Costa is. Costa is that good, and he's a savage, and normally, but Adesanya shut him down tonight and absolutely put on a clinic and destroyed him. You know, you can't be upset about that. I mean, if those guys went in there and did nothing for 5 rounds, I'd be disappointed. But when a guy continues to gain more confidence every time he gets in there and just looks better and better and better and beats a guy that's that good the way that he beat him tonight, you can't be disappointed about that. And what about Paulo? What's next for him? I don't know, man. I'm sure he's devastated right now, and you know, I don't know. You'll have to ask him that question when he comes in. I will. Last one for me. Sarah McMahon was gonna fight here on Fight Island. Second fight that, you know, an opponent gets injured. The first one is Aspen and now Raquel. Where do you see Sarah right now? I'm sure she's ready and waiting for a fight. Wait, are you saying that 2 of her opponents have fallen out? Yeah. Oh, I didn't even know that. Okay. Yeah, I don't know. I don't know the answer to that question. Love Sarah, and hopefully we can get her something else and get her a fight. I'm sure we can. Thank you. Okay, hello, sir, here. So Poland has a new UFC champion. When you add Joanna to him and a couple of other Polish fighters, you get a pretty good fight card to put in an event in Poland. Of course, we have a like crazy times right now, but if there will be a possibility in 2021, it will be one of your priorities to make an event in Poland. Yeah, well, obviously you're as hopeful as I am for 21. I keep saying I can't wait for 20 to be over and wait for 21. I don't know what I'm expecting, but yeah, hopefully the world gets normal again, and we can go everywhere, including Poland. Okay, so last week you made an interview for Polsat Sport, and you said that Joanna may fight another opponent than the rematch with Weili Zhang, and I heard that when she was informed about it yesterday, she was surprised, and she said that she will call you, and she did it or not? She didn't call you? No, she hasn't called. Okay, so but it's like confirmed information that she will need to fight one more fight before a potential rematch with Weili or fight with Rose? Yeah, she would definitely have to have another fight. Rose is going to get the next fight against Weili, and then we'd get Joanna another fight. Okay, and last one for me. UFC signed a new Polish fighter, undefeated, to double KSW champion Mateusz Gamrot, and Joanna Jędrzejczyk and Jan Blachowicz said that they both believe that he is the next UFC champion from Poland. Do
heard about him, and do you have any thoughts about this guy? What's the question? Oh, the kid, yeah, that's 17 and 0. Yeah. No, we're excited about him. We're excited to get him in here and see what he can do. Yeah, very excited. Thank you very much. Thank you. Hassan Abdurrahman, Roya newspaper, here from UAE. First of all, I would like to congratulate you on all the success. I have been covering your 2-4-2 and then 2-4-9 and then 2-5-3. All these championships, I have been following them. I'm very happy to see UFC is here. Now I'd like to ask you, after 1 year of relationship with DCT Abu Dhabi, how do you evaluate this relationship up to date? This is September, actually started with them in last September 2019. How do you evaluate this relationship with them, and to what extent you are happy about everything? Yeah, I've had a relationship with Abu Dhabi. I've had a relationship here for over a decade, and it's always been incredible. Obviously, with what's going on right now, the way that these guys have pulled together and worked with us to pull off Fight Island 1 and 2, I really can't put into words for you how incredible it is and what's been done here. The service has been phenomenal. The venue, just everything from the flight here till we get back on the flight and go home. You don't get service like this anywhere in the world. We're at the W Hotel here in Abu Dhabi. You don't get better service at the Four Seasons. You don't get better service at, name the hotel. This place will kick its ass. It's not even close. And you ask any of my staff how they feel, and I'm sure much of the media too. If you look at what's going on in the world right now, what we're doing here in Abu Dhabi, there's nothing like it. And the second question is, how do you evaluate the performance of the Arab fighters up to date? Now we are trying to help UFC to promote the idea for the Arab new talents. Yeah, Arab fighters, Arab players. Yeah, okay. So once you, once you're in a market long enough like this, here in Abu Dhabi or wherever it is, not only do does the fan base start to grow, but so does the talent. And we're seeing that. Watch what happens here over the next 5 or 6 years. There will be serious talent coming out of this region. This is all for me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Go ahead. Sorry. Do you think Adesanya can be the new Anderson Silva of the division? I think he's going to be the new Adesanya of the division. He's got his own style and his own way about him. I think he's going to be the next big superstar here, especially after tonight's performance. Good? Thank you, guys. Have a good night. Boa Grange.
Israel, congratulations. That was an absolute clinic out there tonight. I mean, obviously you promised to finish him. You promised to do what you did tonight, but did you think it was going to play out the way it did? Yeah, pretty much. I told you guys. One thing I gotta say is the experts, the body analysis experts. And I find it funny how everyone was like, oh my God, he's in Izzy's head. He's in Izzy's head. Bro, all week what I did, I built a condo in front of a beachfront property in Rio de Janeiro inside his head from the first meeting. I met him and I knew. I was like, bro, there's no cameras, there's nothing, and he didn't keep that same energy, and I knew. And then at the beach, fuck, it was hot, and he had his little pohachinas, his little Mean Girls crew that were just hamming up anything he said and just laughing in the background. I was like, you got a laugh crowd with you? You little pohachinas? And it was just funny to me. And then at the weigh-ins, that stare down, I knew I could see it already. I knew what he was gonna do. I knew he had a black belt underneath his shirt, and I knew he was gonna try to hand me a white belt. And I know that's the work of a cringe little gremlin, little Schmeagle. And yeah, he tried to throw it in my face, and I swooped it with my left hand, and I whipped him his face with my right hand. And I was so fast with it, and then I just knew he's gonna do the same thing when he's like, come, stay, come, yeah. And I knew if I walked to him and stare him in the eye, he's gonna push me. I'm 10 steps ahead. I told you guys, I'm 10 steps ahead. You guys think these are just words. I was 10 steps ahead. So I knew when he did that, he's gonna do the same thing in the fight. I told my coach, you'll see it on my documentary, because I've even said it on camera, he's gonna do the same thing in the fight. He's gonna come, I'm here, come. And he did the same thing in the cage. He tried to pretend he was running, clowning around. So, you know, I was humble tonight. So you saw all the taunting coming. Did you see that he was going to be so kick heavy in his approach? I think that surprised a lot of us that, you know, he didn't unleash the punches that we thought we might see more the kicks. Punches. I told you guys in the pre-fight, I'm not a human punching bag. He's only fought human punching bags, guys who just stand there and cover up. And then they just let him tee off on them. And I knew, because he was cutting me off. We are the best city kickboxing. He closed off his left side, so he can only give me his right side. But when he overly committed to the left side, closing it off, I had heaps of room to move on the right side. He kicked me twice in the ribs, man, nothing, I ate those. The second one I made him pay. And then I think the third time he tried to do that, he went to the head, and I felt it go past. There was one jab he threw. Andre was telling me that there was one jab he threw that in the slow-mo, he thought it was gonna hit me, and I just happened to move my head in the, you know, like the last split second. And it's just because of him, because me and Andre played 10 rounds of table tennis to cut weight. He whooped my ass 9-1, but each time it was another one, and it's a never say die attitude. And also he had breakfast and coffee and a date right before, so I'm telling Jeff Nowitzki for that. And I still want my rematch, Andre, because he knows I'll whoop his ass. I know you're confident in your Where you at, Andre? I know you're confident in your game plan, your execution, but obviously anything can happen in a fight. But was there a moment that you were like, no, I got this guy, it's done? After the first round, I was so fresh. I looked over and I could see he was sitting down. And the second round, his antics were still, what they want is they want me to stand there. You come here, why you running? Come here, no, here. You just want me to stand there so you can punch me. I'm not stupid, dummy. I told you, he's dumb. I'm smart. I understand this fucking game. This was my 100th win in combat sports all around. Listen, 1 fight, 2 fight, 3 fight, 4 fights, 5 fights, 6 fights, all the way to a fucking 100. And I've had over 100 fights. I'm not a fucking baby in this game. I've been in this shit for a long time. For a goddamn long time. And I'm still fresh. I'm 31, I look like I'm 26. I'm still fresh. You had a message for his corner afterwards. I'm curious if you can share a little bit of that conversation. I don't know, it was a freestyle, but I knew that little gremlin. The guy with the white glasses, the jizz glasses, all his little antics. He was the one that was hamming it up at the presser. You know, anything Pohachina said, like his little bitch, like his little girlfriend. He was the one that his idea with the whole black belt, white belt thing. And even before the fight, I could see him through the fence. My peripherals could see him through the fence trying to like, he was doing this shit. Right? Literally, he was doing this shit. Like, what do you think I'm gonna do? Focus on you? I got a beast in front of me. Someone who's actually gonna try and like fuck me up, you know what I mean? So, yeah, I'm not gonna be
bro, you can't, this is bulletproof, this is bulletproof. You can't get through this. So I said something to him, I can't remember. And he said, we're coming for you. And I was like, nah, I'm coming on you. Last thing for me, I know you got a lot of respect for Jared Cannonier. Are you expecting him to prevail in that fight? And you think that's the next matchup? I think Jared's gonna dust Robert Whittaker, and I look forward to fighting him. What we said in the DMs, he said he wants to get it done like Naruto and Sasuke, and I said I look forward to that. Yeah, I think he's gonna get it done. I'm rooting for him. But if Robert Whittaker wins and he wants to get knocked out a third time, I can make that happen too. Izzy, when you have a fighter in front of you taunting, I know that you're saying you're bulletproof, the taunting doesn't upset you or anything, but do you just think to yourself, you're giving me free points here, you're letting me just tag you and you're just letting me have it my way? They already know they can't go 5 rounds, so what their tactic was, maybe hold off until the 5th round or like in the later rounds and then come on. Stupid, because you're giving away rounds, you're giving away points. I kept on tagging his legs with different kind of kicks, and I knew his leg was compromised, and he was trying to, all that shit. I'm telling you, man, I read, every time I interact with you, I learn more about you, every single time, and I interacted with him 3 times, and by the 3rd time, I knew I had him. I knew he'd show me his hand. He'd do exactly what he did. And all that taunting shit, bro, I'm a troll. You guys think you're a troll? I'm a fucking troll. But I'm grown now, so I know how to play the game properly. And I wasn't gonna get sucked into his game. I knew all that shit's not gonna work as long as I keep fucking him up and keep touching him. And that's what I did. His leg looked pretty badly damaged. Was that from the teeth to the shin? Do you think you hyperextended his knee? Nah, I think it's just my skinny shins. My skinny shins sliced his legs up, and you could probably see the marks I left on his legs. Yeah, because I did what I did to Brunson. Before the fight, and Brunson, I said, let's go, bitch. I'll show you skinny when I was in my stance. In this fight, I looked at him and I said something, and I said, I'll watch it back and read my lips, but I said something about being skinny. And this fight, I want to, this is the biggest platform, so my narrative for this fight, because everyone says he's a bully, or he walks people down, this and that, rah. And it's not fucking news to anyone that I've been bullied my whole life, you know? So for me, back then, I didn't really have the skill or the will to be able to fight back, you know what I mean? So when this guy and his little pohachinas were doing what they were doing, I was like, all right, watch this. And now I know what to do. I have the will and I have the skill to take the bite out of the bully. So yeah, that's what I did. Was the fight essentially over after you landed the head kick? Was he compromised at that point? Nah, it was over before that. It was over after the 1st round. But I wanted to take the bite out of the bully, and I wanted to, because even some of the shit he did online, someone showed me this, a reporter showed me this video of him with his little entrance and his little skit that they made, and some little memes and other shit he's been doing, because that's what kids now, back then, we didn't have that when I was growing up, but now kids, they go through that shit, social media bullying, and he was trying to do that to me. And for me, it's like he was trying to trigger out the younger Izzy. But you do that and you'll get the big dog in the yard now, you know? So I dedicate this fight to anyone, whether it be at school or at home or even at work if your boss is grinding you. I dedicate this fight to you guys because you have to fight back. You can't just take that all the time. You have to bite back. And last one from me. Ahead of this fight, you famously dyed your hair pink, and then when you shaved it off, you said there was a tactical reason that you shaved your pink hair off. You said after the fight, you tell us what it is. What is it? My dad, shout out to Oluwa Femi, the big dog, big fem dog, Dade Sonia. He said, I'm gonna blind him. I'm gonna blind him with my jab. And when he's compromised with one eye and I take the other eye out, if he sees a pink hue, he'll know where my head is. He'll know, okay, that's where my head is, and he'll just aim for the pink hue. So I was like, you're right. And like a good boy, I listened to my dad. He's a smart man. Izzy, right here. Were you surprised at how much he bit on pretty much every feint you would throw in there? Nope. I'll post a meme after this. There was one with that belt. When I whipped him with that belt, he froze. He was shocked. He was shook. And I knew I could make him react because after that he went all try bulldog on me, and I was just so relaxed. And Steve was holding me up, and I hit him with the crane kick. I'm playful. This is fun to me. And I told Eugene right before we walked out, I was like, let's have fun in there. I'm gonna be smart and tactical and systematic, but we're gonna have fun in there. You know what I mean? And I still did. And then your comments about finding people that miss weight, 90%, was that directed at your teammate Shane's? Yep, and the guy that Mr. Dawodu fought.
It's just cheating. I saw the guy that Dawodu fought right after, with 90 minutes left. He's on the blueberries and the water and whatnot. These guys, some of them are gangsters. Some of them are making money outside the UFC. Some of them have trust funds. 30% of their purse ain't shit. But I'm telling you, if you find someone, 90% of your purse if you miss weight. I guarantee you, no matter how much money you're making, no one's gonna go through this whole camp, through this whole shit, and be willing to give 90% of their pay to the other guy. They will take that 90 minutes they had left to make the weight. They'll take every second to make the weight. So enough of this 30% bullshit, because it's not working. We saw it happen at 221 in the main event, where I debuted, and you saw he got rewarded with a title shot. So yeah, I'm over this, because we have guys like Carlos Alberg and Blood Diamond who aren't even in the UFC yet, and they were ready. They were already close to their weight. They're professionals. So if you can't hack it, go home, because we have killers who are ready to go. What did you make of your teammates' performances in there? I know Kai and Shane came short, but Kai did get a performance bonus fight of the night, and of course Brad Riddell picked up another one. Yeah, I have to watch it again. I think Kai hurt his guy, but kudos to the other guy. He did something unorthodox, a spinning elbow. Yeah, and Shane's guy, who cares? He missed weight. You cheated. Doesn't matter. But kudos to Kai's guy. He did very well. But yeah, shout out to Eugene. He knows. Fuck the other guy. He missed weight. If you miss weight, doesn't matter. Don't take the fight. Or move up in weight. And then one final one. A couple of your fellow fighters like John Jones and Marvin Vittori are commenting like something with your left pec. Was there an injury or anything at all? Or right pec, I should say. Why are they looking at my titties? Yeah, you'd have to ask them. Yeah. Hey, Israel, here. You said in the past that you are interested in fighting with the light heavyweight champion. Now is 205 has a new king. Are you still interested to fight with the super fight champion versus champion in the light heavyweight? Maybe. I'll have to ask Eugene, but like what I said about Anderson Silva defended this belt so many times in the middleweight division, and then he went up to light heavyweight for little shows. I just wanted to fuck up John Jones, and I still will, but I'll just have to talk to Eugene, because even he talked about Stipe Miocic and other things. So yeah, everything's open. Cheddar makes it better. Cheddar makes it better. Yeah, Izzy, great victory. The schmo. You've now... Sorry I missed your interview. My bad on that one. We were just busy. We were flat out, but... Do it on the way home. All right, no worries. You've now beaten 7 of the current 15 top middleweights. It's the champ era. What do you have left to prove? I know you want Cannonier next if he beats Whitaker or the winner of that fight. What do you have left to prove in this division? There's still, fuck. Hold up. The Joker, I like this win over Kelvin Gastelum. I want to showcase my grappling a little bit. I was hoping he would try tonight so I can show him what the white belt can do, because I'm a white belt for life. But yeah, Cannonier next, if he gets past Robert. And yeah, there's a lot left to do in this game, and I'm just steadily working my way day by day, fight by fight. You said 7 guys in the top 15. I mean, Paul only fought 2, and everyone was like, oh, this Israel's all hype. It's all hype, but I love the hype. And I'm just saying, if there was any hype job, it was him. He only fought 2 guys in the fucking top 15, and I fought 6. That's triple the amount of top 15 guys he's fought, or top 10 guys he's fought. And they still call me a hype job. I ain't no hype job, but I'm all hype. And to yourself, what do you have to do to be cemented as the greatest UFC middleweight of all time, surpassing Anderson Silva? Keep doing what I'm doing. Listen to my coaches, listen to my team, and keep doing what I'm doing, because that's what got me to the dance. I didn't have to go get, other, coach to come in and tell us what to do. I stayed true to the people that got me to the dance since day one. And I said that at the presser. So I keep doing what I'm doing, listen to my coaches, and yeah, I love, this doesn't mean anything. This thing is beautiful. And I told you, gold looks good on black skin, but it doesn't mean anything. For me, it's about the victories, the champions, like the names you collect, the scalps you take along the way. If I had lost this tonight, God forbid, if I had lost this tonight, I wouldn't care about this. I would have been sad I lost the fight. That's all I care about, is fighting. This is just nice, because cheddar makes it better. Brings more money, more notoriety, all that kind of shit.
But yeah, I just keep doing what I'm doing and my legacy will be cemented in time. You were the last fighter to step inside the octagon before this pandemic wiped everything away. What was it like to be back inside there in this venue and do what you do? I love it. Honestly, it's much better, to be honest. You don't have these drunk guys who've been drinking since 6 hours ago yelling, knock him out, stand him up, ref, twist his dick. You know, like, yeah, just, I love fans, don't get me wrong. This event would have been beautiful with fans, but in the same breath, some of them in droves are stupid, like dumb as fuck. But individually, when I have individual interactions with fans, I have some beautiful interactions most times. But when they have this mob mentality, they're dumb as pig shit. Right here. So you mentioned Anderson Silva in the cage. Do you think you can repeat or beat his record during his prime? Yes, but that's not my goal, to be honest. I'm not trying to repeat because there will never be another Anderson Silva. For me, it's just being me, being the last and only style bender and keep doing what I'm doing. Like I said, all the guys he ran through in his run, I would have beat them as well. So it's not about quantity, it's about the quality. And already I have some really good quality wins in my belt. That's my 15th knockout and my 100th win. Oh no, my 15th knockout in MMA, but that's my 100th win in fighting. In fighting, that's, like I said, I've been doing this for a long time. So I'm not chasing his legacy, I'm chasing my own legacy. Obrigado. Last one for me. Do you still think about going up a weight class, or you only wanted to face Jojo? Yeah, I definitely will go up in weight class, whether it be heavyweight or light heavyweight. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you? I'm very well. Very congratulations, heartfelt congratulations for this victory. We spoke before the fight and you promised to do this, what you have done today. So congrats. I just want to ask you if you are invited to come again and fight here in Abu Dhabi. Would you accept to come back and fight here? 100%. Huh? And give me your impression about everything you have seen here in Abu Dhabi and their job. They are trying their best to be the capital of the fighting games. He's just getting his phone now. Hold up. Definitely, I'll definitely come back to fight in Abu Dhabi. I mean, amidst the pandemic, one of the reporters asked in the presser, you know, some question. It was I was like, what makes the UFC different and blah, 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 amidst the pandemic and blah, 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 blah. And I almost interrupted the question. I kind of did, and I was like, this guy, like, it's what got the UFC to where it is. Like Joey Rogan says, without Dana White, none of this would be possible. It's because of him, you know? And I'm not bootlicking or anything, but I'm just spitting facts. It is what got us here right now. Because everyone, when Fight Island came around and everyone was like, why would you put on a show in the midst of a pandemic? How dare you? And they got shut down, but hey, cajones, man, the UFC, this is what we do. We're not like any other sport. Motherfuckers wish they were us. They wish, they try. This is what we're doing. You fucking kick a ball into a net or over a post or whatever. All we're trying to see is the baddest motherfucker. And we really get to do that shit. We really prove that shit. So, yeah, right now, amidst the pandemic, the UFC is leading the way in all sporting organizations, all sporting leagues. The UFC is leading the charge in showing what can be done amidst the pandemic and keeping everyone safe. And look, we've got an island in Abu Dhabi, you know, shut down from the outside world, quarantine tested like a motherfucker, everyone getting checked and rechecked and quadruple checked. Like, it's second to none. I was quite impressed. It was a little bit tedious when you're trying to cut weight, but I'm still impressed. Any more? All right, thank you guys. I know, oh, congratulations, okay. Thank you guys, I know this has been crazy times, but thank you guys for what you do. And I know I give you guys a hard time sometimes, but thank you for what you do. But always remember, please, always remember, you guys wouldn't have a job if we don't step in that fucking cage. So be mindful with your clickbait headlines, please. Be mindful with the stories you write.
and the tones you use. Even if you want to criticize a fighter, please criticize away. I am open to criticism because I am human, but be mindful with your clickbait headlines, because one of you will get checked and slapped with a belt one day, my white belt. For more updates, do like, share and subscribe News World and give your valuable comments.